Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with the chapter synthetic fibers and plastics. In the previous two videos we have done synthetic fibers in detail. Now we have to start with the topic plastics. So let's start with the topic plastics. Okay, so till here we have done everything like this. All things we have done. If you have any doubt, you can just comment down in the comment box. Now here is a new topic: plastics. What is plastics? Plastic, you use plastic articles in everyday life. Yes, you use poly bags for carrying vegetables, for carrying milk. You use plastics in your laptops, in your phones. There is a certain type of plastic used in your daily lives, very much familiar to you. So the plastic inner structure, okay, I'm talking about the inner structure of plastic, like the particles of plastics. जो particles होते हैं plastic के, वो कैसे arrange होते हैं, वो कैसे develop होते हैं, वो एक से एक कैसे जुड़े होते हैं, वो two types में अपन देख सकते हैं. There are two major types. The first is linear and the second is cross linked. ओके, लीनियर में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जॉइंट होते होते एक चेन बनाता है विद अ single particle chain. ठीक है. And in the cross link there are linked between two or more polymers or two or more elements, one to another. एक से एक साथ दूसरे, ये भी connected है, ये भी connected है, फिर इससे ये connected, ये connected, ये connected, like that. Okay, so understood the concept of linear and cross linked? Yeah. Okay, if you have any doubt you can just comment down. Now continue with the reading. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है वैसे ही प्लास्टिक एक पॉलीमर है. वो भी बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. All plastics do not have same type of arrangement of units. सारे प्लास्टिक का सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है. In some it is linear, whereas in some it is cross linked. I have told you the difference between them. किसी के अंदर linear होता है, किसी के अंदर cross linked होता है. Plastic articles are available in possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7. आप प्लास्टिक को कोई भी शेप में, कोई भी साइज में आप इसको यूज कर सकते हो. देयर इज नो डेफिनेट शेप कि यही प्लास्टिक की साइज होती है. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक कोई भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है? लाइक हियर आर सम एग्जांपल, लाइक हियर इज अ चेयर, अ बिग चेयर, हियर इज अ बकेट, हियर इज अ मग, हियर इज अ bike, all made up of plastics. Okay, so every different things are made up of plastics. So how plastics can be molded like that? The fact that the plastic is easily moldable, therefore can be shaped in any form. हमारे पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्लास्टिक को कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं. लाइक वी मोल्ड क्ले इनटू एनी शेप. लाइक प्लास्टिक को भी किसी भी शेप में कन्वर्ट करा जा सकता है. इस वजह से वो किसी भी शेप, कोई किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो सकता है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, melted, rolled into sheets and made into wires. That is why I find such a variety of uses. प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपन, तो प्लास्टिक्स जो है रिसाइकलिंग में भी काम आ जाएगा. अपन को रिसाइकल करके उससे दूसरी चीजें बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी हियर इज अ प्लास्टिक ऑफ ब्लू, हियर इज अ प्लास्टिक ऑफ व्हाइट, हियर इज अ प्लास्टिक ऑफ रेड. सो यू कैन सी द डिफरेंस. इट कैन बी मेल्टेड, it can be rolled into sheets, it can be made into thin wires. That is why plastic is such a uses. Okay, important, please mark it down on your book. Okay, a polythene. This is also important. Polythene, poly plus ethene, is an example of plastic. It is used for making commonly used polythene bags. ये जो polythene होती है, ये polythene bags को बनाने में काम आती है. और polythene made up of होती है poly plus ethene. ठीक है, इथीन जब बहुत मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे यूसेज में आएगा जब पॉलीथीन. ठीक है, चलो
Now there is another topic, thermoplastics and thermosetting plastics. You should learn this difference, and there is something very easy topics will be there. You will understand very fast. Okay, तो अब अपन thermoplastics and thermosetting plastics के बारे में अच्छे से जानते हैं. You will observe. Okay, yeah, say now try to bend a piece of plastic yourselves. Can all the plastic article bend easily? आप किसी भी प्लास्टिक के पार्टिकल को बेंड करके देखो, क्या सारे पार्टिकल सेम वे में बेंड होंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड. जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाते हैं. व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, जब हम एक प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालेंगे, इट गेट्स डिफॉर्म्ड. वो जो होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी. Such plastic which gets deformed easily on heating can be bent easily and can known as thermoplastics. जो प्लास्टिक जो गर्मी की वजह से, हीटिंग की वजह से बेंट हो जाए इजीली, उसको उन प्लास्टिक्स को थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. पॉलीथीन या फिर पीवीसी इसका एग्जांपल्स हैं. These are used for making toys, combs and various types of containers. Toys बनाने के लिए, comb बनाने के लिए और बहुत सारे अलग अलग plastic containers बनाने के लिए. On the other hand, there are some plastics which are molded once and cannot be softened by heating. और एक दूसरी तरफ ऐसे plastics होते हैं जिनको एक बार mold करने के बाद वो वापस बार बार mold नहीं हो सकते हैं. In fact, when the heat is passed, these are called thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. Examples इसके क्या, bakelite and melamine, और उसके examples है polythene और PVC. Okay, so bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite जो है उसको electricity और हीट जो है वो बहुत जल्दी उसके ऊपर कंडक्ट नहीं हो पाती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. द स्विच which we use for making our light on, making our fan on, making our ACs on, all made up of bakelite. Utensils are also made up of bakelite. Melamite is a versatile material. It resists fire. इट रेजिस्ट फायर मीन्स ये फायर को रोकता है, इस पे फायर कभी अटैक नहीं कर सकती, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. बाकी कोई भी प्लास्टिक से सबसे ज्यादा हीट जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो होता है मेलामाइन. इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स. फ्लोर की जो टाइल्स होती है वो इससे बनाई जाती है. किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. shows table various of thermoplastics and thermosetting plastics. Some examples are given below. Like thermosetting plastics are this switches and a plate, kitchenwares, yeah. And thermoplastics are like a dabba in which we stored our food items, and a wire, a wire, electrical wire which are surrounded by our home. All examples of thermoplastics. Okay, so plastic as material of choice. Now another topic, you shall understand it very carefully. Today, if we think of storing food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. हम अभी कुछ भी स्टोर करने का सोचते हैं, लाइक अ फूड आइटम, वाटर, या फिर मिल्क को, या फिर पिकल्स को, अचार को, या फिर ड्राई फ्रूट्स को, ड्राई फूड को, सबको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर सबसे कन्वीनियंट होते हैं. अपन प्लास्टिक में बहुत इजीली स्टोर कर लेते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. एक तो लाइट वेट होते हैं, लोअर प्राइस, good strength and easy handling. Okay, so it is important again. But being lighter as compared to metals, अगर अपन metals को use करें तो उनसे ज़्यादा lighter होते हैं. Plastics are used in cars. Cars के अंदर भी use आते हैं, aircrafts के अंदर too, spacecrafts के अंदर भी. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces. और ये एक endless list है क्योंकि सब चीज में plastic use आता है. Now let us discuss the characteristic or
प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, हम कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज plastic is non-reactive. Plastic is non-reactive. What do you mean by this? You know that metals like iron get rusted when left exposed in moisture and air. We all know that अगर हम metal को बाहर रखेंगे तो उसमें rusting हो जाएगी, उस वजह से वो धीरे धीरे corrode होके खत्म हो सकता है. But plastic do not react with water and air. Plastic जो होता है वो water और air के साथ react ही नहीं करता है और इस वजह से वो corrode भी नहीं हो सकता. That is why uh, uh, they are used to store various kinds of materials including many chemicals. जो chemicals होते हैं वो भी प्लास्टिक में स्टोर होते हैं क्योंकि वो वाटर एयर किसी से रिएक्ट नहीं करते एंड दे आर वेरी लॉन्ग टाइम रिसोर्सेज, तो इनको ये बहुत ज़्यादा यूज आते हैं. ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट, यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलो. Now the second property which we are going to discuss is plastic is light, strong and durable. Okay, so talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आप पहले कौन सी buckets यूज करते थे और अब हम आप कौन सी यूज करते हैं. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स? प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज करने का एडवांटेज क्या है? व्हाई डू वी यूज प्लास्टिक कंटेनर्स? सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, ये हम सब ने अभी पढ़ लिया कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल, बहुत लंबा चलता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और हर शेप और साइज पे कन्वर्ट होने की उसमें शक्ति होती है. इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, और बहुत सारे पर्पसेस में इसका यूजेज आता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. मेटल से ज्यादा चीपर होते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा तादाद में यूज आए जाते हैं एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स के अंदर भी. Make a list of different kinds of plastic containers that are used in daily life. So I'll just highlight for you the important thing you should highlight in your book itself. Okay, so this all things are important. Okay, chalo. So the third property which is plastic is poor conductor. What? Plastic is poor conductor. One second. One second, there's some error. Yeah. Okay. Plastic is poor conductor. How plastic is poor conductor? You have learnt about the plastics are poor conductor of heat and electricity. We have learnt earlier that plastic जो होता है उस पे heat और electricity का effect नहीं पड़ता है. That is why electrical wires have plastic covering. इसलिए जितने भी अपन electric wires अपने घर पे भी हो चाहे अपन ने बाहर देखे हो, सब के ऊपर येलो, ब्लू, रेड कलर का जो स्ट्रिप लगा रहता है वो क्या होता है? वो एक प्लास्टिक ही होता है. ओके, सो हैंडल्स और स्क्रू ड्राइवर के जो पीछे का हैंडल होता है ग्रीन कलर का, दैट इज आल्सो अ प्लास्टिक, आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स, अपन जो घर पे फ्राइंग पैन्स यूज करते हैं जो उसके हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं क्योंकि वो हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही फायर को, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, so these are the some special cases you should read about them. Okay, I'll just uh, make an important mark for you in this para. Okay, so आगे बढ़ते हैं अपन. Now here, did you know, let's read this because I think it's important and it will come in your exams. Plastic find extensive use in the healthcare industries. Some examples of their use are the packaging of tablets. हम जो tablets medicines use करते हैं उसकी जो packaging होती है वो plastic की होती है. Threads use करते हैं, doctor gloves जो होते हैं वो भी इसके ही होते हैं, और medical instruments obviously of
made up of some materials are made up of plastics. Special plastic cookware is used for microwave ovens के अंदर भी use आता है. Teflon is special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookware. आते हैं ना non-stick pans, so इनके अंदर क्या होता है, Teflon की coating की जाती है. That why? Because Teflon is a plastic and which do not stick with oil and water. फायरप्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं. ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली. सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं. वी हैव लर्न दिस. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट. जो फायरमैन्स होते हैं उनकी जो क्लोथ होते हैं उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक का कोट होता है, जिस वजह से उनको आग नहीं लगती है. ठीक है. प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है. अभी हमने पढ़े बहुत सारे यूजेस प्लास्टिक्स के. अब प्लास्टिक्स क्या एनवायरनमेंट के लिए भी इतना ही हेल्पफुल है? Shall we discuss it? Yeah, it's important. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. Yes, that is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. Yeah, we see that plastic gets accumulated in our homes. Ultimately plastic finds its way to the garbage, और जब ज़्यादा excrete में हो जाता है, जब we put them in the garbage boxes, then in the garbage area. Disposal of plastic is a major problem. Disposal of plastic is a major problem. ओके, सो डिस्पोजल जो होगा प्लास्टिक का वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक क्या बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं. व्हाई? क्यों नहीं होते हैं या क्यों हो जाते हैं? लेट्स पहले देखते हैं कि डिस्पोज हो पाते हैं कि नहीं. दे आर सेइंग दैट प्लास्टिक जो है वो बहुत जिसका जो डीकम्पोजिशन है वो बहुत मुश्किल है. क्यों? अ मटेरियल विच गेट डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेसेस से जो नेचुरल प्रोसेसेस से डीकम्पोज हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. ओके, सो I think this is enough for today. If you like the video, do hit like the button and share the video. Subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.